हाय फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स इसका का रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि पीएम से करवा रहा हूँ, जिसमें समरी दिया हुआ है। उस समरी को पढ़ करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और रिवाइज करवा रहा हूँ। आप लोग बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो उससे जो है क्या होगा, आपको जो है माइंड्स में सारे पॉइंट्स पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छा रहेगा। आप रिवाइज कर सकते हैं आराम से, बढ़िया से। सिस्टम. A system is a group of interconnected components working towards the accomplishment of common goal by accepting inputs and producing outputs in an ordered transformation process. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स क्या क्या होते हैं? सिस्टम एलिमेंट्स, इंटरेक्टिव बिहेवियर, डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, वर्किंग आउटपुट, इनके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो एलिमेंट्स के बेस पे एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल, इंटरेक्टिव बिहेवियर पे ओपन क्लोज्ड, डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन पे मैनुअल ऑटोमेटेड, उसके बाद वर्किंग आउटपुट के हिसाब से डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, abstract system also known as conceptual system or model can be defined as an orderly arrangement of interdependent ideas or constructs. For example, a system of theology is an orderly arrangement of ideas about God and the relationship of humans to God. On the other hand, physical system is a set of tangible elements which operated together to accomplish an objective. Example, computer system, university system, etc. उसके बाद आगे आप आ जाइए। बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव बिहेवियर, an open system interacts with other systems in environment, whereas a closed system does not interact with the environment and does not change with changes in environment. For example, information system is an open system because it takes input from the environment and produces output to the environment, which changes as per the changes in the environment. Consider a throw away type sealed digital watch, which is a system composed of a number of components that work in a cooperative fashion designed to perform some specific task. This watch is a closed system as it is completely isolated from its environment for its ऑपरेशन। अच्छा, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, इसमें देखिएगा, इन अ मैनुअल सिस्टम द डेटा कलेक्शन, मेंटेनेंस एंड फाइनल रिपोर्टिंग इज done by human, whereas it is carried out by computer system or say machine itself in the case of automated system. उसके बाद आगे आप आ जाइए। बेस्ड ऑन वर्किंग आउटपुट कैसे होता है इसमें? अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट्स इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, whereas probabilistic system can be defined in terms of probable behavior. डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्लियर बताएगा, वो प्रेडिक्ट करेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिस्टिक में क्या बताएगा? प्रोबेबल बिहेवियर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is a deterministic system, whereas inventory system is a probabilistic system where the average demand, average time for replenishment, etc. may be defined, but the exact value at any given time is not known. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क। देखिए इसमें क्या क्या है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहली बात तो पीपल चाहिए, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, उसके बाद डेटा चाहिए और नेटवर्क चाहिए। वो जो है टोटल मिलकर के कंप्यूटर का जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए आगे, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसमें कॉन्सेप्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, ऑपरेशनल लेवल सिस्टम प्रोड्यूसेस a variety of information for internal and external use. Their role is to effectively process business transactions, control industrial processes, support enterprise communications and collaborations, and update corporate database. The main objective of OSS is to improve the operational efficiency of the enterprise. These are further categorized as follows. कौन कौन से? पहला, transaction processing system. At the lowest level of management, TPS is an information system that manipulates data from business transactions. Any business activity such as sales, purchase, production, delivery payments or receipts involves transaction, and these transactions are to be organized and manipulated to generate various information products for external use. For example में देखिएगा क्या है?
Selling a product to customer will give rise to the need of further information like customer billing, inventory status, and increase in account receivable balance. TPS will thus record and manipulate transaction data into usable information. TPS components क्या क्या होते हैं? The principal components of TPS includes inputs, processing, storage, and outputs. The components or elements are part of both manual and computerized systems. फीचर ऑफ टीपीएस क्या क्या है? बेसिक फीचर्स ऑफ टीपीएस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल, सोर्स ऑफ इनपुट्स फॉर अदर सिस्टम्स. टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में देखिएगा, ईएसएस जो होता है स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम होता है, ये सीनियर मैनेजर के लिए होता है. जैसे एग्जांपल में 5 ईयर ऑपरेटिंग प्लान, 5 ईयर बजट फोरकास्टिंग, 5 ईयर सेल्स ट्रेंड फोरकास्टिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, उसके बाद जो है मैन पावर प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं किसमें? ईएसएस में. एमआईएस और डीएसएस जो होता है मिडिल मैनेजर्स के लिए होता है. उसके बाद इसमें देखिएगा मैनेजमेंट लेवल सिस्टम्स में क्या क्या आता है? सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स रीजन एनालिसिस, उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, एनुअल बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, उसके बाद प्राइसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, रीलोकेशन एनालिसिस, उसके बाद और आगे आप आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एनालिसिस. ये सब जो है मिडिल मैनेजर का काम होता है जो कि एमआईएस और डीएसएस के थ्रू कर सकते हैं. उसके बाद आप आ जाइए केएमएस ओएएस. ये जो है नॉलेज लेवल सिस्टम्स होता है. इसमें जो है इंजीनियरिंग वर्क स्टेशंस ये एग्जांपल हैं. उसको वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स वर्क स्टेशंस, डॉक्यूमेंट इमेजिंग, मैनेजरियल वर्क स्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स, ये सब जो है नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स के लिए होता है केएमएस और ओएएस. टीपीएस जो होता है वो ऑपरेशनल मैनेजर्स के लिए होता है. ठीक है जी. ऑपरेशनल सिस्टम्स में इसमें देखिएगा ऑपरेशनल लेवल सिस्टम में एग्जांपल देखिएगा क्या है? मशीन कंट्रोल में ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्लांट शेड्यूलिंग, मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल, कैश मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, पेरोल, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए होता है. सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीज़ें. उसके बाद आप आगे आ जाइए नॉलेज लेवल सिस्टम्स में. इसमें क्या होता है? दिस सिस्टम सपोर्ट्स डिस्कवरी, processing and storage of knowledge and data workers. These support the business to integrate new knowledge into the business and control the flow of paperwork and enable group working. Office automation systems, OAS. It is most rapidly expanding computer based information systems. Different office activities can be broadly grouped into the following types of operations: document capture, document creation, receipts and distribution, filing, search, retrieval and follow-up, calculations, recording, utilization of resources. ठीक है जी. उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ओएएस कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन, रिड्यूस द साइकिल टाइम बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ मैसेज एंड रिसिप्ट्स ऑफ मैसेज एट द रिसिप्ट्स and recipients, and reduce the cost of office communication both in terms of time spent by executives and cost of communication links, and also ensure accuracy of information and smooth flow of communication. All the activities mentioned have been made very simple, efficient and effective by the use of computers. The application of computers to handle the office activities is also termed as office automation. कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स में देखिएगा मेजर कंप्यूटर बेस्ड ओएएस आर टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स. अब इसमें आप एक एक देखिएगा. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. Knowledge management system is the process of capturing, developing and sharing and effectively using organizational knowledge. It refers to a multidisciplined approach to achieving organizational objectives by making the best use of knowledge. Knowledge management systems, KMS, knowledge management systems, refers to any kind of IT system that stores and retrieves knowledge, improves collaboration, locates knowledge sources, mines, repositories for hidden knowledge, captures and uses knowledge, or in some other way enhances the KM process. Explicit and tacit are two types of knowledge. देखिए नॉलेज के भी टाइप्स दो. कौन से? एक्सप्लिसिट और tacit. Explicit knowledge मतलब explicit knowledge is that which can be formalized easily and
consequently is easily available across the organization. Tacit knowledge क्या होता है? Tacit knowledge on the other hand resides in a few, often in just one person, and hasn't been captured by the organization or made available to others. मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में देखिएगा, इट सपोर्ट्स द मिडल मैनेजर्स इन मॉनिटरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज. इट प्रोवाइड्स periodic reports rather than instant information on operations. For example, a college control system gives report on the number of leaves availed for the by the staff, salary paid to the staff, funds generated by the fees, finance planning, etc. These are generally categorized into management information system and decision support system. मतलब कि मैनेजमेंट लेवल सिस्टम जो होते हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ईच ऑफ देम इज ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो. देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम has been defined by Davis and Olson as an integrated user machine system designed for providing information to support operational control, management control, and decision making functions in an organization. Another notable definition of MIS is a computer based system that provides flexible and speedy access to accurate data. MIS support the managers at different levels to take strategic at top level or tactical at middle level management decisions to fulfill the organizational goals. Characteristics of an effective MIS. देखिए इफेक्टिव MIS के लिए क्या क्या उसकी फीचर्स हैं. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव MIS आर management oriented, management directed, integrated, common data flows, heavy planning elements, subsystem concept, common database, computerized. उसके बाद प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव MIS, यानी इफेक्टिव MIS होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए. द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव MIS आर डेटाबेस, क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS. उसके बाद देखिएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम is a type of computerized information system that supports business and organizational decision making activities. A decision support system can be defined as a system that provides tools to managers to assist them in solving semi-structured and unstructured problems in their own somewhat personalized way. DSS is not intended to make decisions for managers, but rather to provide managers with a set of capabilities that enable them to generate the information required by them in making decisions. A DSS supports the human decision making process rather than a means to replace it. अच्छा, प्लानिंग लैंग्वेज में देखिएगा दो प्रकार के, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज और स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज. कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस में क्या क्या आता है? देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कंपोनेंट्स जो होते हैं, द यूजर में कौन कौन से मैनेजर, स्टाफ, स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट, ये सब आ सकते हैं. डेटाबेसेस में डेटाबेस इज इंप्लीमेंटेड एट 3 लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल. मॉडल बेस द प्लानिंग लैंग्वेज इन अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अलाउज द यूजर टू मेंटेन अ डायलॉग विद द मॉडल बेस which is the brain of DSS because it performs data manipulations and computations with the data provided to it by the user and database. Difference between DSS and traditional MIS. DSS और ट्रेडिशनल MIS में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में. देखिए DSS और ट्रेडिशनल MIS, फिलॉसफी, डायमेंशंस जो बेसिस हैं, और DSS और ट्रेडिशनल MIS में डिफरेंसेस. देखिए फिलॉसफी के बेसिस पे प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड टूल्स, डेटा, मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस टू एंड यूजर्स. ट्रेडिशनल MIS में क्या होता है? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स. ओरिएंटेशन क्या है? एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, और ये है इंटरनल ओरिएंटेशन. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल, और ये रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल. अच्छा, एनालिटिकल कैपेबिलिटी क्या होता है? मोर एनालिटिकल कैपेबिलिटी होता है डीएसएस में, लेकिन ट्रेडिशनल MIS में क्या होता है? लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटी होता है. सिस्टम एनालिसिस क्या है? emphasis on tools to be used in decision process, or emphasis on information requirement analysis. अच्छा, सिस्टम डिजाइन, इंटरेक्टिव प्रोसेस, और इसमें क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट बेस्ड ऑन स्टैटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स. आगे आ जाइए, कहता है
strategic level systems. It supports the senior level management to tackle and address strategic issues and long-term trends both inside organization and the outside world. Executive information system के बारे में देखते हैं. इसमें क्या है? It is sometimes referred to as an executive support system. It serves the strategic level, that is top level managers of the organization. ESS creates a generalized computing and communications environment rather than providing any preset applications or specific competence. The executive decision making environment, इसमें क्या है? The type of decisions that executives must make are very broad. Often executives make these decisions based on a vision they have regarding what it will take to make their enterprise successful. Some of the characteristics of the top types of information used in executive decision making are lack of structure, high degree of uncertainty, future orientation, informal source, low level of detail. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स. कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, उनके टाइप्स देखिएगा. Apart from the information system discussed above, there exist other categories of information system also that support either operations or management applications. Some of them are expert systems, cross-functional information system, and core banking systems. These are briefed as follows. अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. क्या है पहला? ए एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एन एक्सपर्ट सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड डीएसएस दैट यूटिलाइजेस नॉलेज जनरली पोजेस्ड बाय एन एक्सपर्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. Expert systems are software systems that imitate the reasoning process of human experts and provide decision makers with the type of advice they would normally receive from such experts. A characteristic of expert system is the ability to declare or explain the reasoning process that was used to make decisions. Cross-functional system, cross-functional information systems. It is also known as integrated information system that combines most of information systems and designed to produce information and support decision making for different levels of management and business functions. एग्जाम्पल में देखिएगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. अच्छा, अब देखते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज प्रोसेस मैनेजमेंट software that allows an organization to use a system of integrated applications to manage the business and automate many back office functions related to technology, services, and human resources. ERP software integrates all facets of an operation, including product planning, development, manufacturing, sales, and marketing. Core banking system, CBS. Core banking system may be defined as back-end system that processes daily banking transactions and post updates to accounts and other financial records. These systems typically include deposit, loan, and credit processing capabilities with interfaces to general ledger systems and reporting tools. Core banking functions differ depending on the specific type of बैंक. एग्जाम्पल ऑफ कोर बैंकिंग प्रोडक्ट इंक्लूड क्या है? इन्फोसिस, फाइनाइकल, न्यूक्लियस, फिन1 एंड ओरेकल्स फ्लेक्स क्यूब एप्लीकेशन फ्रॉम देयर एक्विजिशन ऑफ इंडियन आईटी वेंडर आईफ्लेक्स. अच्छा, बेस्ड ऑन द एफोरमेंशन्ड फैक्ट्स द फॉलोइंग टेबल, जो भी टेबल बताया जा रहा है नीचे, ये बताता है कि मेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कि एक बार फिर से जो है वो बता रहा है कि यार होते क्या क्या है एक्चुअली. देखिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी टीपीएस. दीज आर डिजाइन टू प्रोसेस एंड कैरी आउट रूटीन ट्रांजैक्शंस efficiently and accurately. A business will have several TPS. For example, billing system and invoices to customers to calculate the weekly and monthly payroll and tax payments of an organization, to calculate raw material requirements, stock control system to process all movements into within and out of business, etc. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? दीज आर सिस्टम्स दैट हेल्प इन द enhancement of performance of or productivity of employees who are dealing with the data processing and information. For example, the use of MS Office can generate the list of customers who have done purchase of certain types of products, number of sales of products done on a particular date, etc.
Knowledge management system क्या होता है, KMS? These helps business in creation and sharing of information and are typically used in business where employees create a new knowledge and expertise which can then be shared by other people in the enterprise to create further commercial opportunities. For example, KMS are most effectively used in firms of lawyers, accountants, and management consultants. One can say that these are effective in systems which allow efficient categorization and distribution of knowledge. For example, knowledge discovery in database and data mining tools can be used to extract the knowledge from word processing documents, spreadsheets, PowerPoint presentations, internet pages, databases, data warehouses, etc. उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? दीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू हेल्प मैनेजमेंट टू मेक decisions in situations where there is uncertainty about the possible outcomes of those decisions. DSS consists of tools and techniques that gather relevant information and helps in analysis of the options and alternatives. It usually uses complex spreadsheets and databases to generate information. Management information system क्या होता है? It is mainly concerned with internal sources of information. It inputs data usually from the transaction processing system and gives output as a series of management reports. MIS reports can be used by middle level management and operational supervisor to gather desired information. Executive support system is a reporting tool software that allows us to turn our organization's data into useful summarized reports. These reports are generally used by executive level managers for quick access to reports coming from all company levels and departments such as billing, cost accounting, staffing, scheduling, etc. ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एंटरप्राइज प्रोसेसेस में क्या होता है? पहली बात तो देखिएगा रोल्स क्या क्या होते हैं इसके, 3 वाइटल रोल होते हैं. पहली बात सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशंस. उसके बाद सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, फिर सपोर्ट स्ट्रेटेजी कंपिटिटिव एडवांटेज. दिस इंक्लूड्स एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फंक्शनल बिजनेस सिस्टम्स. अच्छा, अब आप आ जाइए आईटी इन बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या है? मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, रिटेलिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब में जो है आईटी का यूज होता है. उसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ आईटी एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स. क्या क्या है? टॉप मैनेजमेंट लेवल में क्या क्या होता है? डीएसएस, इंटरनेट, इंट्रानेट, बीआई, केडीडी, उसके बाद लैपटॉप एक्सेट्रा यूज किया जाता है. अच्छा, मिडिल मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है? मेनली यूजेस ईआरपी, सैप, डीबीएमएस, इंटरनेट, उसके बाद लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई एक्सेट्रा. अच्छा, लोअर मैनेजमेंट लेवल क्या यूज करता है? मेनली यूजेस सीसी, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. आगे क्या है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन, टेक्निकली इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस डेटा. डेटा कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, वैल्यूज और रिजल्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन डेटा. एग्जांपल, इन अ स्प्रेडशीट स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स obtained in science and arts subjects represents data, whereas the graph that shows the percentage of students who acquire more than 80% in science subjects and 65% in arts subjects represents information. Information may be represented in the form of text, graph, pictures, voice, videos, etc. ठीक है? उसके बाद information is data that have been put into a meaningful and useful context. Mere collection of data is not information and mere collection of information is not knowledge. एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है भैया? देखिएगा, दीज आर availability, purpose, mode and format, decay rate, frequency, completeness, reliability, cost benefit analysis, validity, quality, transparency and value of information. यानी इंफॉर्मेशन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए. अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, पर्पस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, मोड एंड फॉर्मेट होना चाहिए, डीके रेट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैलिडिटी, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस देखिएगा. टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन में क्या होता है? इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और ये है ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होता है? मिडिल लेवल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एमआईएस और डीएसएस. अच्छा, इसेंशियल टू कैरी आउट डे
टुडे एक्टिविटीज़ स्मूथली एंड एफिशिएंटली लो लेवल ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है टीपीएस और ओएएस, ठीक है जी। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव, यानी बहुत जरूरी है भैया, सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। ईआरपी, डेटा माइनिंग टूल्स, डेटा वेयर हाउस, बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस, एमआईएस, इंटरनेट, ये सब जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो है होता है, ठीक है। और ये जो है उसकी वजह मतलब उससे हम लोग को जो बहुत फायदेमंद होता है। ओवरव्यू ऑफ अंडरलाइंग आईटी टेक्नोलॉजीज, मेजर आईटी टूल्स क्या क्या होते हैं, क्रूशियल फॉर बिजनेस ग्रोथ आर क्या है, बिजनेस वेबसाइट, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर, लैपटॉप, प्रिंटर, वेबकैम, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आप लोगों को ये मेरा रिवीजन लेक्चर देखने के लिए। बाकी इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, मैं तो आप लोगों को खुद पता है, बट फिर भी जो है आप लोगों को करना क्या है, इसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार जो है अगर उसको डबल स्पीड से करके देखिएगा, सुनिएगा, तो जो है 12 मिनट 13 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा रहेगा कि जो है आप एक पूरा चैप्टर जो है समरी वे में तैयार कर सकते हैं। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो है लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।